Everyone, welcome back my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 59 for class 10 subject mathematics. Today our topic is conversion of solid. So in this video we are going to learn about conversion of solid from one shape to another shape. So solid object, for example wax, iron, etc. is often heated to make it liquid and then cooled in container with the different shape change the shape of solid. So in this process the shape is changed बट द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. सो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि जब भी हम एक सॉलिड से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे, सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करेंगे, देन वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. कीप इन माइंड वॉल्यूम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वॉल्यूम को तो ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हम वॉल्यूम को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक शेप से दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं सॉलिड को, बट उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहता है. सो हियर यू कैन सी द फिगर 1 वी हैव ए सॉलिड क्यूब. सो ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म इन लिक्विड एंड ऑन कूलिंग इट विल बी इन सेमी लिक्विड एंड आफ्टर कूलिंग यू कैन सी इट विल टेक एनी शेप इन विच वी वांट इट टू ट्रांसफॉर्म. जिस शेप में हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वही शेप ये ले लेता है लिक्विड. सो हियर वी हैव हेमिस्फीयर इन द फर्स्ट केस. वी हैव एग्जांपल नंबर 1. So hemisphere means अर्धगोला. So hemispherical tank full of water is emptied by pipe at the rate of 3:4/7 liters per second. So देखिए 3:4/7 per second यानी इतना लीटर पानी, जो आपका लीटर लिक्विड है ये क्या पानी आपका पर सेकंड खाली होता है. How much time will it take to empty the half the tank? So आधे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा. If it is 3 meter in diameter, हमें दिया गया diameter of hemisphere that is 3 meter. So radius will be half of diameter that is 3/2 meter. So diameter of hemispherical tank is 3 meter. So radius of hemispherical tank is 3/2 meter. So now volume of tank will be 2/3 pi r cube. So देखिए वॉल्यूम क्या है, इसकी कैपेसिटी होगी किसकी, हेमिस्फीयर की. एंड वी ऑल नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube. देखिए 4/3 pi r cube वॉल्यूम किसका होता है, स्फीयर का होता है. सो दिस इज हेमिस्फीयर वी हैव. सो हेमिस्फीयर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 2/3 pi r cube. So now 2/3 into pi we have 22/7 and radius we have 3/2. So after simplifying we will get 99/14 meter cube, that is the capacity or you can say volume of tank. So now 19/14 into we all know 1 meter cube equals to 1000 liter. Keep in mind 1000 liter. Or we can say 1 meter cube equals to 1 kiloliter also. Keep in mind. So 1 meter cube equals to 1 kiloliter or 1 meter cube equals to 1000 liter. Or we can say 1000 cubic centimeter equals to 1 liter. So ये आप मेजरमेंट याद रखेंगे. So 1000 cubic centimeter equals to 1 liter, 1 meter cube equals to 1000 liter and 1 meter cube equals to 1 kiloliter. So here we have to change into liters. So 1 meter cube will be equals to 1000 liter. So multiply it by 1000 liter and this will be 99,000/14 liter. So now the volume of water we have. So volume of water कितना हमारे पास, so 1/2 into 99,000/14 liter. So ये मिल जाता है हमें 99,000 क्योंकि हमें हाफ ऑफ एम्प्टी करना है इसको, सो हाफ के लिए हमने 1/2 किया इस वॉल्यूम का. सो 1/2 of 99,000/14 liter. So this will be 99,000/28 liter. So now time taken to taken out 3:4/7 liter of water equals to 1 second. So time taken to 1 liter of water will be 1 into 7/25. देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, देन इसको रिवर्स कर दीजिए. सो दिस विल बी 7/25 सेकेंड एंड टाइम टेकन टू टेक आउट 99,000/28 liter of water will be more. So more के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. So 7/25 second into 99,000/28 second. So this will be 990 second, or we can say 990/60. So that it will be converted into minute. So this will be 16.5 minute. So देखिए 16.5 मिनट लगेंगे इस हेमिस्फेरिकल टैंक को आधा खाली करने में. So this is all about example number 1. So now we have example number 2 in which cylinder is transformed into another cylinder. So you can say एक बैलून से दूसरे बैलून में चेंज किया जा रहा है. So example 2 we have a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness.
सो देखिए हमें एक कॉपर रॉड दी गई है जिसका डायमीटर कितना 1 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। इज ड्रॉन इनटू वायर। कॉपर हमें क्या करना है, जो कॉपर रॉड हमारे उसको वायर में ट्रांसफॉर्म करना है जिसकी लेंथ कितनी है 18 मीटर है। ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर। हमें वायर की थिकनेस फाइंड आउट करनी है एंड वी आर गिवन लेंथ ऑफ वायर दैट इज 18 मीटर। सो कॉपर रॉड से कॉपर वायर ट्रांसफॉर्म की जा रही है दैट इज सिलेंडर टू सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। क्योंकि देखिए हमने अभी भी बात इनिशियली बिगिनिंग में डिस्कस किया था कि वॉल्यूम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वॉल्यूम को ना ही तुम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो कीप इन माइंड वॉल्यूम ऑफ रॉड विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। सो एंड बोथ आर इन सिलेंड्रिकल शेप। सो वॉल्यूम ऑफ वायर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर square h. So volume of rod will be that is cylindrical in shape, so pi r square h. So here pi 22/7 we can say, or you can keep it same as that is pi, and radius is 1/2 and 1/2 whole square, and height is 8 centimeter. So this will be 2 pi cubic centimeter. So now the length of new wire is of same volume will be 18 meter, or we can say 1 meter equals to 100 centimeter, as we know that 1 meter equals to 100 centimeter. So this meter will be transformed into centimeter, so 1800 centimeter. So if r is the radius in centimeter, so now r is the radius of cross section of wire, so in centimeter, so its volume will be pi r square h. So pi into r square, that is radius square, that we are already given, sorry, we are to find, and here into length is length, or we can say height of the wire is 1800 centimeter. So volume of wire equals to volume of rod, that is pi r square into 1800 equals to 2 pi. So put all the values here, and after simplifying we will get, so we can say r equals to 1/30 centimeter. So the diameter of cross section area will be the twice of radius, that is 1/15 centimeter, and we can say 0.767 millimeter. So as we all know that 1 meter equals to 100 centimeter, keep in mind, and 1 centimeter equals to 10 mm. So हमने यहाँ क्या किया, 1 सेंटीमीटर को राइट कर दिया 10 mm से, and after simplifying we will get 0.67 millimeter approximately. So keep in mind 1 kilometer equals to 1000 meter. So आप डायमेंशन सारी आपको लर्न होनी चाहिए. 1000 meter, 1 meter equals to 1000 meter, and 1 centimeter equals to 10 mm. So keep in mind. So now cone to sphere. So now a cone is transformed into sphere in example number 3. So a cone of height 24 centimeter and radius of base is 6 centimeter is made up of molding clay. So a child reshapes it in the form of sphere. Find the radius of sphere. So देखिए volume of cone will be equals to volume of sphere, and we are given the height of cone, that is 24 centimeter, radius of base is 6 centimeter, and we can find the volume of cone, and now this volume will be equals to volume of sphere. So we need to find the radius of sphere, but we are given the dimension related to cone. So volume of cone will be equals to volume of sphere, and volume of cone equals to, we are given, first of all, the given dimension, that is height of cone, that is 24 centimeter, and radius of cone is 6 centimeter. So volume of cone will be 1/3 pi r square h, that is 1/3 of volume of cylinder. So 1/3 into pi, keep the pi as same as, so pi will remain same, and radius, that is 6, so 6 square, and height is 24, so height will be 24. So after simplifying we will get 288 pi cubic centimeter as the volume of cone. So now volume of sphere will be 4/3 pi r cube. So equate both the volumes. So you can see here, if r is the radius of sphere, then its volume will be 4/3 pi r cube. So volume of cone equals to volume of sphere. So volume of cone we have 288 pi equals to, and this will be 4/3 pi r cube. So pi will be cancelled, and after simplifying we will get radius as 6 centimeter. So thus the radius of sphere is 6 centimeter. So radius of sphere कितना मिल जाता है हमें, 6 centimeter मिल जाता है. And these are the example. So now we have 2 questions for practice. So let's move ahead for the solution of these 2 questions. So a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recasted into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. So देखिए हमें क्या गिवन है, एक मेटेलिक स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर है. इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है. देखिए सबसे पहले इसको मेल्ट किया जा रहा है, इसको पिघलाया जा रहा है, और पिघला के इसको चेंज किया जा रहा है सिलेंडर में, दैट इज ऑफ बैलेंस शेप. सो देखिए सिलेंडर शेप में इसको चेंज किया जा रहा है, और सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर. सो देखिए डिफरेंट नोटेशन रखिए. मैंने स्फीयर का रेडियस जो है वो स्मॉल आर रखा है, और जो मोर वैल्यू है दैट इज 6 सेंटीमीटर. सो इसका मैंने कैपिटल आर से नोटेशन दे दिया, दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर.
and we are to find the height of cylinder. So let us assume the height of cylinder to be h. So we are given that radius of sphere as 4.2 centimeter and radius of cylinder to be formed equals to r equals to 6 centimeter. ये हमें given है, and let the height of cylinder to be h. Since volume of sphere equals to volume of cylinder, देखिए एक शेप से दूसरे शेप में हम चेंज कर रहे हैं, किसको, स्फीयर को चेंज कर रहे हैं सिलेंडर में. सो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वी ऑल नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 pi r cube, and here volume of cylinder will be pi r square h. So pi will be cancelled. 4/3, and radius we know that we are already given, that is 4.2. So 42/10, 42/10 and 42/10, as here it is cube, so we will have to write 3 times. So 42/10, 42/10 and 42/10, and radius of cylinder is 6. So here it is r square, so 6 into 6, and we are to find height, that is h. So after transposing 6 to the left hand side, we will get 4/3 into 42/10, 42/10, and it is 42/10. Now 6 will be transposed to the left hand side and become 1/6, or ये भी 1/6. So 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 3 14 जा 42. So after simplifying, 14 4 जा 56 and 7 7 जा 49. 56 into 49 will be 2744, and 10 into 10 into 10 become 1000. So height will be 2744 by 1000, or we can write it as 2.744 centimeter. So हमें height मिल जाती है, height of cylinder as 2.744 centimeter. So this is the height of cylinder, and this is all about question number 1. So now proceed for question number 2. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time the tank will be filled? So देखिए एक फार्मर क्या करता है, अपने एक पाइप जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर में गिवन है, वो कैनाल से, नहर से एक पाइप को कनेक्ट करता है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, अपने फील्ड में कनेक्ट कर देता है. और अपने फील्ड में क्या है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, 10 मीटर. सो 10 मीटर अगर डायमीटर है, देन रेडियस विल बी 5 मीटर, एंड डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 2 मीटर. सो देखिए सिलेंड्रिकल टैंक का हमें डायमीटर और हम कह सकते हैं रेडियस, और हमें हाइट की जो हमें डेप्थ गिवन है. सो हमें रेडियस और डेप्थ हमें गिवन है, सो हम वॉल्यूम ऑफ टैंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इफ वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर हार. सो देखिए हमें जो रेट ऑफ फ्लो गिवन है, और आप कह सकते हैं कि 1 हार में कितना वाटर फ्लो करता है वो हमें गिवन है. देन हमसे पूछा जा रहा है टैंक कितने टाइम में भर जाएगा. सो वी आर गिवन द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, दैट इज 20 centimeter. So radius will be 10 centimeter, half of the diameter, and now as we know that 1 meter equals to 100 centimeter. So this 10 centimeter will be transformed into meter, so this will be 1/10 meter. So हमें 1/10 meter, that is radius of pipe. Let us assume that length of pipe to be L. So देखिए हम अगर assume कर लेते हैं कि L लेंथ की पाइप को फिल करके पहले पानी से वो इसको टैंक में एम्प्टी कर देते हैं और टैंक फिल हो जाता है. ये assume कर लेते हैं हम एक्चुअली कि L लेंथ की पाइप को पहले पानी से फिल कर लेते हैं, वो खाली करते हैं टैंक में, टैंक भर जाता है. सो हम सबसे पहले L लेंथ ऑफ पाइप फाइंड आउट कर लेंगे, और देन उसी लेंथ से हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड आउट कर लेंगे. एज वी आर ऑलरेडी गिवन दैट 3 किलोमीटर पर हार इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. सो उस टाइम से हम इस लेंथ के हेल्प से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गिवन रेडियस, सो वी आर गिवन डायमीटर ऑफ टैंक, दैट इज 10 मीटर, सो रेडियस इज 5 मीटर, एंड डेप्थ ऑफ टैंक इज 2 मीटर. सो internal diameter of pipe is 220 centimeter. So therefore internal radius of pipe will be half of the diameter, that is 10 centimeter. So we can say 1/10 meter, and diameter of cylindrical tank equals to 10 meter. So therefore radius of cylindrical tank will be 10/2, that is 5 meter, and depth of cylindrical tank will be 2 meter, that is we are already given. So now as volume of water in pipe of length L meter we can say, and equals to volume of tank. सो हमने देखिए डिस्कस किया कि अगर पाइप को फुल जो L लेंथ की पाइप है उसको फिल कर लें पानी से और उसको एम्प्टी करते हैं टैंक में और टैंक फिल हो जाता है. सो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक विल बी सेम. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाइप विल बी pi r square h, or we can say pi r square L. Similarly volume of water in cylindrical tank will be pi r square d. So pi will be cancelled, and radius is of pipe is 1/10, so r square है, so 1/10 into 1/10 and into length L. So here radius of tank, that is 5 into 5, and depth is 2 meter. So 5 into 5 into 2 become 50, and this 10 and 10 will be transposed to the right hand side, become 10 into 10. So this will be 5000. So 5000 meter is the length of pipe, or we can say 5 kilometer.
as we know that 1000 meter equals to 1 kilometer. So 5000 meter will be 5 kilometer. Now we are given that as 3 kilometer water flows in 1 hour. So देखिए 3 किलोमीटर पानी बहता है 1 घंटे में. सो 1 किलोमीटर वाटर विल फ्लो इन लेस टाइम. सो लेस के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं. सो दिस विल बी 1/3 आवर. सो देखिए 3 किलोमीटर पानी बहता है 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर पानी कितने बहेगा, कम टाइम में, और कम के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1/3 आवर. एंड 5 किलोमीटर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 किलोमीटर. सो 5 किलोमीटर वाटर विल फ्लो इन 1/3 इंटू 5. सो मोर के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 1/3 इंटू 5, दिस विल बी 5/3 हार. सो देखिए हार को मिनट में चेंज कर दीजिए. सो दिस विल बी 60. सो 5/3 इंटू 60, दैट इज 23 60. सो 20 इंटू 5 बिकम 100. So 100 minutes. So tank will be filled in 100 minutes. This is all about worksheet number 59. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.